So good morning, one and all. I think so. In the last lecture, we started about the air pollution, and we discussed various aspects of air pollution, various forms, remedies, technological intervention. So many things we have discussed in the last lecture. So starting from that, I think so. From where we left, we left at particular this particular point where engine emissions versus combustion we are talking about. And why? Because I'm going to discuss this point in detail, not exactly very detail, but in some other detail. That is, okay, if you say what we have experienced, okay, vehicular pollution is the most dangerous form of air pollution. Why? Because of two or three things which I've told you in the last class. Because the vehicular pollution is a non-point source. Non-point source means you cannot pinpoint. It's a mobile source. So mobile force and non-point source of pollution is something very dangerous, which you cannot really pinpoint the pollution has been created and where the effects are being created. Okay, so that's why before actually going into detail of the discussion of this kind of emissions, let's study, okay, what are two type of engines, like two type of internal combustion. The internal combustion engines basically can be classified into two different that ways. They are spark ignition or compression ignition engines. And you know very well, I'm not going to tell you in the detail of the SI and CI engines. Basically, SI engines, spark ignition engines, they start with a combustion process in each cycle using a spark plug. And the spark plug gives a high voltage electrical discharge between, I think so, two electrodes, which ignites what? Air fuel mixture, which is present in the carburetor, in the combustion chamber surrounding the plug. Okay, so this is SI. And whereas the CI, the compression ignition engine, you have the compression combustion process starts when air fuel mixture which you are taking to carburetor or that particular part self ignites due to high pressure, high temperature caused by the high compression of that mixture. So basically, when you have the comparison between these two kind of engines, so a lot of particulate matter is being released when you are talking about CI engines, and whereas fast ignition engines, you're talking about routine three things: carbon monoxide. When you have unburnt combustion, you have not proper combustion. Hydrocarbons, no doubt, always should be there, and NOx, because your fuel contains sufficient amount of nitrogen compounds. Okay, so these are the four strokes you must have read from your +2 level. I'm going to not going to detail of that. Basically, you in the compression ignition engine, uh, because this is the most common engine used always in the heavy vehicles, all kind of stuff. Okay, uh, hold on बेटा, सिलेबस की बात मत करो, मैं बाद में बात करना है. सिलेबस सब कुछ बेटा एलएमएस पे लिखा हुआ है. एलएमएस पे पूरी डिटेल है बच्चे. ओनली वाटर पोल्यूशन न्यूमेरिकल्स. बेटा प्लीज नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. मैंने पूरी डिटेल एलएमएस पे डिटेल की है. Okay, I'm trying to get little closer to mic so that voice may not break. I'm holding a mic close to my mouth. Okay, so basically when we're talking about IC engines, we have four kind of strokes. So like this is something I'm talking about: induction stroke, compression stroke, power stroke, and the exhaust stroke. And you know very well about these strokes because you must have read it from your this +2 knowledge. Basically, I'm going to let you know the few things about the induction stroke and all the kind of strokes, because these all strokes actually define the how the combustion is going on in the system and how the exhaust is being released. On the basis of that, you can really see how much emission is coming out from that kind of vehicles. So induction stroke is basically air plus fuel mixture charges into the cylinder. Okay, and this is like an induction stroke. Due to this movement of the piston, the pressure in the cylinder is low, definitely low. Then in compression stroke, uh, when the old fuel, air plus fuel comes or charged into the cylinder, both the valves, inlet and outlet valve, are closed. When the inlet and outlet valve both are closed, the charge, air fuel charge, fluid charge is compressed by the piston. So when it is being compressed, a high pressure, high temperature is being generated. Then there comes power stroke. The power stroke is basically when the power generated, the spark is being ignited, and the vast gas pressure expands, the temperature also rises. This pushes the piston down the cylinder. This is here the power is being generated.
And the last is the exhaust stroke. That's something very important. Depends upon how these three strokes actually worked upon. So depend upon that, exhaust stroke is being defined, where the pressure is released and the exhaust gases are being released from the cylinder, from the exhaust valve. So this is overall when thinking about these kind of engines. So this is a basic theory. Okay, this is basic theory. Now, thing is, when you're talking about this thing, okay, I'm not going to give the details. Yes, this is part of automobile engine, right? Yes, okay, beta, this is okay. So this is something, the emission standards the country provides fine for the fuel consumption and emissions. I'm not going to detail of that, but if you come to know that the Euro standards are much stringent than the Indian standards, okay, regarding the emissions norms, regarding the emission norms. So Euro 6 currently are practiced, whereas India is talking about BS6, okay. So basically, when you're talking about these kind of emission standards, these emission standards are, this is one thing very carefully right now, beta. These emission standards are basically on the basis of exhaust. What kind of gases are being released from the exhaust? And no doubt, when you talk about Euro standards, and when we are moving to Euro 5 or Euro 4 to Euro 5, Euro 5 to Euro 6, what actually technology has been modified? See this. This means engine has to be modified. Engine has to be superiorly modified so that the exhaust can be minimized. The emission from the exhaust can be minimized. This is totally dependent upon the engine modification. And engine modification means all the mechanical part and the electronics part, basically. All the mechanical and electronic part. So when talking about mechanical and electronic part, so that's why when you go to these kind of countries, you really find a mechanical or electronics engineers working in this kind of organizations. And there are mechatronics people working in this kind of organization. Mechatronics means they have a knowledge of mechanical and electronics. So that's why they can easily understand the concept of this thing. Why? Because if you're moving to higher standards, you can modify an engine. So if you modify the engine, because all your electronics part, sensor part are being attached to the movement of the engine. So if your engine is no doubt very good, but it's not effectively controlling the electronics or sensors part, then I think so wear and tear of the engine will be very soon. And you cannot get rid of these kind of standards, because you must have read the Volkswagen case in recent history, because they have manipulated the emission standards like Euro 6, and the company was banned. They suffered the billion-dollar losses. You can go through the net at that particular time what happened to that company. That company came to verge of closure just because they have manipulated the Euro standards. Whereas when talk to India, जो मैंने आपको बात बताई थी, मैंने जो प्रोजेक्ट भी दिखाया था आपको, हम जिस वन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो, ठीक है, आपके आगे गाड़ी जा रही है एक बेटा, वो गाड़ी के पीछे एग्जॉस्ट में से ब्लैकिश धुआं आ रहा है, और जब उसके पूछोगे उसके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होगा. So this is something I'm talking about. और इंडियन कंटेस्टेंट को पता है कि हम पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स को कितना लाइटली और कितना सीरियसली लेते हैं. ठीक है. सो ये चीज मैंने जो बताई थी आपको, जब आपको प्रोजेक्ट के बारे में याद हो, जब मैंने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट दिखाए थे, ऐसे प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो मैंने वो जो आपको बताया था ये चीज के बारे में कि बच्चों ने इमिशंस के बारे में जो बात की थी, और जो एक सॉफ्टवेयर बनाया था बच्चों के बारे में, वो मगर वो चीज इंप्लीमेंट हो जाए ऐसी चीजें बेटा यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी कि आपके डैशबोर्ड पे, जहाँ पे डैशबोर्ड पे सब आपके स्पीडोमीटर के सामने एक स्क्रीन आ जाए, और स्क्रीन के ऊपर आपकी इमिशन की वैल्यू आ जाए, तो मेरे ख्याल से देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु कैन मैनिपुलेट द इमिशंस. There's no need of pollution certificate, and those particular emissions are being connected directly to the cloud computing, to the center server. और आज हम कार की बात कर रहे हैं, जो रिसेंट कार्स आ रही हैं, वो बोला जाता है द इंटरनेट इनसाइड. MG हेक्टर की जो गाड़ी आई है, टोटली इंटरनेट कनेक्टेड, टोटली इंटरनेट कनेक्टेड. तो जब इंटरनेट कनेक्टेड है, तो हमें देखना पड़ेगा हमारी कंट्री को रिक्वायरमेंट क्या है. हमारी कंट्री का रिक्वायरमेंट अब पोल्यूशन का सबसे बड़ा केस है, एयर पोल्यूशन का. बच्चे, why can't we can develop that software? Why can't we develop a system so that directly on the dashboard you have emission standards? यहाँ पे है बेटा मेरे कंप्यूटर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट, ना कि एक व्हाइट कॉलर जॉब वहां पे बैठ के काम करना वहां के लिए. और इस एरिया में काम किया हुआ बेटा मेरे ख्याल से बिलियनर 10 दिन के अंदर बिलियनर है वो बच्चा. कि you can make a system so that on a dashboard itself the emission standards, emissions values are coming up, and no doubt अब वो वैल्यू सीधा सेंटर सर्वर को जा रही हैं. If somebody is stopping a traffic, or police is stopping their vehicle and asking for emissions, and if he's not chalaning the vehicle, he's gone, because the server
From server, the data has already gone to the server, cloud computing. And he will be asked, you are supposed to interfere the car, okay, and you interfere the car, you have not चलान the car, and otherwise चलान की जरूरत ही नहीं है बेटे, चलान की जरूरत नहीं है. सबसे बड़ी बात देखो, उस क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, सेंट्रल सर्वर के थ्रू मेरे पास सेंट्रलाइज सर्वर पे आपके पास डाटा आ रहा है. मेरे पास घर में एक मेल आएगी, लेटर आएगा मेरे पास, विद लव यू आर बीइंग चलान्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग. और ये क्यों नहीं हो सकता बेटा? जब हम फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं कि हर काम रोबोट्स के थ्रू होगा, ठीक है. बाकी चीजों के लिए हमने रोबोट हायर कर लिया है. मेरे को पता लगा कि एनसीआर रीजन में पता नहीं लगा, मेरे को पता ही है, जो मेरे वहाँ क्लोज फ्रेंड्स हैं, कि जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे मेड्स का बहुत स्केर्सिटी हुई वहां पे, और वो मेड्स पे ही चलते हैं कि मेड नहीं आएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा घर पे. सो दे हैव हायर्ड अ रोबोट टू वाइप आउट द फ्लोर, for wiping the floor, and they have spent 1 lakh 2 lakh rupees for bringing that robot. मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड ने मंगवाए हैं वहां पे दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में. दे आर बोथ आर वर्किंग. बोले कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते चीज के लिए. सो सी वी आर स्पेंडिंग 2 lakh rupees for bringing a robot just wipe the floor, which we can't do. What is exactly required for Delhi NCR, especially talking about why NCR, because I'm talking about that area. वो बाकी states में भी applicable है. Moment you come out, you can't breathe. You have to breathe, na? You are breathing a polluted air. And Delhi, NCR, or every particular Punjab or Haryana also, I can say. So what we need these kind of things, yaar. Just understand. मैं पहले सेमेस्टर में बता रहा हूँ, दिमाग में रख लो बेटा ये चीज. अगर आप ये 3rd ईयर तक प्रोजेक्ट कर पाए बेटा, गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट आपको हाथों हाथ लेगी प्रोजेक्ट वाला. They badly need this kind of technology. आपको ये भी पता ना कि बाहरली कंट्री में चलान ऑन रोड नहीं किया जाता. वहां पे आपको बाय मेल और बाय पोस्ट आता चलान आपके पास. तो व्हाई कांट वी डू दिस काइंड थिंग्स? और इंडिया में रिक्वायर्ड है. और उस कंट्री में क्यों नहीं होता पता ये चीज? उस कंट्री में पोल्यूशन नहीं है, उस कंट्री में एयर पोल्यूशन नहीं है. ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इनफ. और मैं अब आगे मूव करूंगा बेटा ये चीजों के बारे में. No, scale of air pollution. So scale of pollution beta dekh lo which is ke liye. It can be a local scale, it can be urban scale, it can be regional scale, it can be country to continent scale, or it can be global scale beta. So also talking about local scale is basically when you're talking about locality ranging from 1 2 3 4 localities and at up to 5 kilometer of earth surface. So it going to impact a single source or group of sources. Okay, like you have an industry in Ludhiana. When you invest in Ludhiana or Bathinda thermal power plant, or in Bathinda your thermal power plant, so within the 5 kilometer range you have a impact of air pollution. Okay, so for example, in Bathinda you have a thermal power plant. The thermal power plant is coal based. So lot of people earlier, now they have modified the technology a little bit, but earlier I know, and I went there, I saw that kind of thing. People were complaining that कि शाम को जब हम कपड़े जो बाहर डाले होते सुखाने के लिए लेके जाते थे, वो ब्लैक हो रखे होते थे बिकॉज ऑफ फ्लाई ऐश जो बर्न होती थी वहां पे, बर्न प्रोड्यूस होती थी. कोल बर्न से फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है, एंड फ्लाई ऐश इतनी लाइट होती है कि वो विंड के साथ आगे मूव कर जाती है. जो आगे पढ़ाने वाला हूँ, हाउ दे आर मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस, और वो कपड़ों के बाद डिपोजिट होती जाके. और पंजाब, हरियाणा, उत्तर यूपी के जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो बेटर समझ सकते हैं कि जब पैडी स्ट्रॉ बर्न होता है तो हमारे यहाँ पे घरों के अंदर बाहर या रोड पे आपने ब्लैक 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 छोटे छोटे पार्टिकल देखे होंगे. वो फ्लाई ऐश है बेटे, अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं. सो बेसिकली व्हेन दिस इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड, यू हैव अ अर्बन स्केल, urban total particular area when talking about 50 kilometer area. So once you have these kind of problems, you have two types of problems over here. So release of primary pollutant, and no doubt depending upon the conditions, sunlight, UV intensity, humidity, all kind of factors, you can have a formation of secondary pollutant also, like ozone, which I told you in the recent classes. Then after you move to regional scale, whole Punjab area. Okay, then in the whole Punjab area, when the effect is pronounced everywhere due to wind direction, wind speed, all particular parameters, you have a acid rain, all kind of stuff over there. Okay, then the country to continental scale, then you
can say the effect can be transmitted to some other country also. And this is basically applicable, when it's being taught, applicable to the countries which have a close boundaries over there, like European countries. The European countries are being connected by road. There's a one, road, and one cross the road, you will be in another country. Okay, so once you have an effect in one particular Italy, air pollution effect in Italy, sorry, cause this problem is there in Italy with air pollution. So besides Italy, you have like Croatia, or you have Slovenia, with the boundary sharing, so you can affect over there also. Okay, so this is country to continental scale. तो दिस इज समथिंग यू कैन हैव, तो ये इफेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है जी. तो मैं, मेरे को अभी तक याद है इसमें लाइट साइड पे, लाइटर साइड, मेरे को अभी तक याद है व्हेन आई वाज टीचिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट टू द स्टूडेंट्स, योर सो कॉल्ड सीनियर सुपर सीनियर्स, फ्यू इयर्स बैक. तो एक लड़का बोलता क्लास में खड़ा होकर, सर दिस इज समथिंग वेरी गुड. मैं कहा व्हाई इट्स वेरी गुड बेटा, कंट्री टू कॉन्टिनेंटल स्केल, व्हाई इट्स वेरी गुड, इट्स बैड. कहता नहीं नहीं सर, हम ना इंडिया में पोल्यूशन करेंगे, इफेक्ट पाकिस्तान में होगा, वो भी बाउंड्री क्लोज होती है. तो दैट वाज समथिंग वेरी फनी. मैंने बोला कि बेटा, इंडिया पाकिस्तान के इस मुद्दे से ऊपर उठ के भी आओ, और कभी ना कभी पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन होगा तो तेरे घर में भी तो पोल्यूशन आएगा. तो हवा एक डायरेक्शन थोड़ी मूव करेगी, हवा उल्टी तो मूव करेगी कभी ना कभी. हाँ, ये ठीक है सर. सो दैट इज अ फनी साइड, बिकॉज उसको मैंने बोला कि विंड डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी बेटा. विंड डायरेक्शन हर 2 3 4 मंथ्स में, डिपेंडिंग अपॉन टोपोग्राफी और द एरिया लोकेशन, वो चेंज होती रहती है. विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन चेंज होती रहती है. ओके, देन नो डाउट ग्लोबल स्केल का तो सबसे बड़ा कंसर्न है ही है बा. ठीक है. सो दिस इज समथिंग अबाउट ग्लोबल स्केल. So these are the effects of air pollution. I have told you, beta. You can go through material, plants, humans, animals. Okay, everywhere you have an effect of air pollution. But reason you have to understand the effect. You have to understand. Then you work on the remedy. You need to work on the remedy. That is very much required. Okay, so once you are not working on, you're just reading it. ओके, मेरे ख्याल से +2 से पढ़ते आ रहे हो, 10 से पढ़ते आ रहे हो चीज, मैंने पढ़ा दिया आपको. लेकिन जो असली चीज पढ़ाने वाला हूँ इसमें से, वो चीज क्या है बेटा. देखो, आपको शायद इसका पता है, एयर पोल्यूशन का पता है, सबको पता है कि इफेक्ट्स हैं, प्लांट्स पे है, मटेरियल्स पे है, ताजमहल खराब हो रहा है, सबने पता कर लिया. ह्यूमंस पे इफेक्ट आ रहा है, एनिमल्स इफेक्ट आ रहा है, यू हैव एवरी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. बट अब सबसे बड़ी बात है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ, हाउ द टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड, कैन बी यूज्ड. सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे हमने इंजीनियरिंग में बताना है आपको. ठीक है, +2 तक रट्टा मार लोगे बेटा. और कुछ तो लोग बीटेक में रट्टा मारते हैं, जिसके लिए सिंपल एनर्जी इन्वायरमेंट है. तो मैंने अभी बोला है, आई एग्री इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट, कॉमन चीजें हैं सारी. लेकिन टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर इंजीनियर्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को, मैकेनिकल कैसे इन्वॉल्व करना है चीजों के लिए. तो इसमें देखिए, मैंने कुछ बच्चों को काम करवाया था बेटा ये चीज, और मैंने इस पे काम भी करवाया, बच्चों को प्रोजेक्ट भी करवाया, और बहुत से रिजल्ट इसमें आए हमारे पास. और ये चीज मैं कुछ करवाने वाला हूँ बच्चों को. और वो पोल्यूशन को कैसे इफेक्ट करते हैं बेटा. तो पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ व्हीकल पोल्यूशन, और मेरे ख्याल से यू नो वेरी वेल, दिल्ली में भी बोला गया कि 70% पोल्यूशन इज बीइंग क्रिएटेड बाय और इफेक्टेड बाय द व्हीकल पोल्यूशन. ओके, सो बेसिकली हमारी एक टीम थी स्टूडेंट की, फर्स्ट ईयर की, बहुत साल पहले, एंड मे बी 3 or 4 years बैक. उन्होंने एक स्टडी की. गुड़गांव में एक ऐसा है, मानेसर वाला, पता नहीं कौन सा एक पॉइंट एरिया, जहां पे हैवी ट्रैफिक जैम डेली लगता है, डेली, नॉट मॉर्निंग बट मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. तो सबसे बड़ा पॉइंट हमने वो ऑब्जर्व किया, सैटेलाइट एरिया से ऑब्जर्व किया हमने वो पॉइंट, और फिर देखा कि नंबर ऑफ व्हीकल्स उस एरिया में, उस ट्रैफिक सिग्नल में कितने टाइम तक खड़े रहते हैं. तो कुछ ने बताया कि सर हम उस एरिया से बिलोंग करते हैं, कई बार तो 3 4 टाइम सिग्नल ग्रीन होता है तब हमारी टर्न आती है, 4 टाइम सिग्नल ग्रीन होने पे. सॉरी. So this is something very good point. Pollution created by start vehicles of signals. Observe करो. Okay, हमारा क्या इंजन स्टार्ट रहता है उस चीज के लिए हमेशा. We wait for 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes. When you're talking about that particular area, even more than 15 minutes, यार. तो vehicle is totally on. तो can't we develop a system? Can't we develop a system कि it should be automatically off, gets off when you have a larger stay at the signals. Technology can be modified. Again, point comes to technology. अभी हमारी जो गाड़ी आ रही है, पुश ऑन पुश ऑफ आ रही है ना. Push on push off. Push on push off is always effective when you have a signal. Then push off, switch off your vehicle. Moment the light is on the vehicle.
So this is something very, very, very damnly required when talking about. And third point, which I really, want over here. Why I'm over here? Because this thing I've observed in the Europe. When I observed this in Europe, I thought, why can't it be implemented in India? Because same problem in India also. Europe में सबसे बड़ा एक point क्या है? Europe, yes, hybrid engine also there, but I agree, बेटा hybrid engines दे रहे हैं कि हाइब्रिड में पहले क्या आता है, वो इलेक्ट्रिकल स्टार्ट होता है और पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है, वही है ना बेटा? डन। तो वो भी हो सकता है, बट बात यह है कि वही है कि ऑटोमेटिकली ऑफ होना चाहिए वहां पे, अगर ऐसी कोई चीज है, या ऑफ करना चाहिए, नहीं करे तो चलाना है, नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऑफ होना चाहिए अगर गाड़ी 2 मिनट से स्टॉप करती है। ओके, सो थर्ड पॉइंट जो है आई नो बेटा, फॉरेन कंट्री में तो हाइब्रिड की बात छोड़ बेटा, दे आर नाउ टोटली गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल, दे आर टोटली गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजन्स, और वो पेट्रोल डीजल तो बैन ही कर रहे हैं बेटा टोटली। नाउ कम टू दिस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स बेटा, इसमें डिस्कस करूंगा, फिर आगे मूव कर जाऊंगा। यही चीजें होती हैं जो बेटा ना किसी सिलेबस में होती हैं, सॉरी, जो प्लस में पढ़ के आते हो, जो एक्चुअल इंप्लीमेंट करते हैं। तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन यूरोप, लिसन लिसन, व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन यूरोप, और वो क्यों इफेक्टिव इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ओके, क्यों इफेक्टिव इंडिया में इंप्लीमेंट हो सकती है बेटा? सेम फंडामेंटल से। यूरोप का अगर देखोगे, यूरोप में भी सेम फंडामेंटल है, तभी कहते हैं ना यूरोप की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री मैच करती है, कि दोनों हिस्ट्री बहुत एंशिएंट है। और वही एंशिएंट हिस्ट्री को उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया उस चीज के लिए, वो अलार्मस है। और इंडिया बहुत पीछे है। और वहां पे सबसे बड़ी बात मैंने देखी, एक चीज ऑब्जर्व की, मैं आपके पास आ रहा हूं, कि उनके पास भी छोटे 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 स्ट्रीट्स हैं। हाई राइज बिल्डिंग यूरोप में नहीं है, वहां पे आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, छोटी छोटी स्ट्रीट्स में घर, जैसे इंडिया में जाओ ना, इंडिया में आप सिटी में आओगे, छोटी छोटी स्ट्रीट्स, अंदर घर, फिर विलेज आ गया, सॉरी फिर एक लाइन आ गई, फेम में लाइन आ गई, सेम इज इन यूरोप। बस उन्होंने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को बिना छेड़े हुए कैसे मॉडिफाई किया। सो मैं आई वाज स्टैंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर रोड, देयर वाज अ ट्रैफिक लाइट रेड, ओके, जैसी वहां पे ऑन हुई, ग्रीन हुई, तो मैंने जैसे ग्रीन हुई, मैंने ऑब्जर्व किया, एक कार, 2-3 कार थी, जो भी बाकी थे, और एक मोटर बाइक था। मोटर बाइक, उनके पास हाई वो होते हैं दूसरे वाले, हाई हाई, एंड इमीडिएटली the speed of the bike or car was raised to 40, 50, 60, 80, 90, 100 on the road. सोचो, 100 की स्पीड पे उस गाड़ी लेके गया। और मेरे को बहुत दूर तक आवाज आ जाती थी, बिकॉज ऐसी इंजन की आवाज आती है बहुत दूर तक, बहुत दूर तक उसकी आवाज आ रही थी। सो मैं कह रहा हूँ कि ये आगे तो उस रोड पे बहुत घुमाता है, इसके तो 50 मीटर या 30 मीटर पे जाके तो फिर सिग्नल है, 30 मीटर पे फिर सिग्नल है, 20 मीटर पे फिर सिग्नल है, क्योंकि मैं उस रोड पे बहुत घुमा था। So I asked somebody over there on a shop, I want to ask this thing, curiosity हो जाती है। तो what he told me कि sir, we have a signal synchronization over here in Europe. What is that? Signal synchronization means, number one, if one signal is green, then throughout in that particular region, जितने भी सिग्नल बन रहे हैं, काफी लाइन तक वो सब ग्रीन हो जाएंगे। तो क्या होता है जनरली इंडिया में, देखो क्या होता है, आप अपनी सिटी की बात कर लो, मैं पटियाला की बात करता हूँ, पटियाला में थापर की बात करता हूँ, थापर की बात नहीं करता बेटा, जो थापर बच्चे आ चुके हैं उनको बेटर पता है, और अपनी सिटी का देख लो आप। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मोमेंट यू गो आउट ऑफ थापर, जैसे थापर से आउट होके लेफ्ट टर्न लेते हो, आपका पहला सिग्नल आएगा, ओके। जैसे पहले सिग्नल से यू टर्न लेके 22 नंबर की तरफ जाते हो, 20-30 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा सिग्नल जाता है, अगर ये ग्रीन है तो अगला रेड है। और अगर उस सिग्नल से आगे जाते हो टुवर्ड्स बाई नंबर, 50 मीटर पे दूसरा सिग्नल आता है, अगर गारंटी है, अगर ये ग्रीन है, वो रेड है, वो रेड है, तो ये ग्रीन है। अब इनको पता है, सिग्नल सिमुलेशन को पता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करता ये चीज। जब यहां से गाड़ी निकलेगी तो कम से कम 30, 40, 50 की स्पीड पे तो जाएगी, और 30, 40, 50, 60 की स्पीड पे अगर जाती है, 50, 60 की एवरेज स्पीड लगाता हूं, जाता हूं, तो इतने सेकंड के बाद ये इस सिग्नल में पहुंच जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट रुकेगी। Why can't we make the signal green? नहीं जी, हमें गारंटी है, जैसे मैं निकलता हूं, ये ग्रीन, वहां रुक गया रेड, वहां से निकला अगला रेड, वहां रुक गया। A lot of fuel is being wasted, and a lot of fuel is wasted, a lot of emission is being created, a lot of emission is created, this is actually going to take pollution level high, नहीं चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं अपने थापर के बच्चों को बोल रहा था ये प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे भी देखा, और मैंने यहाँ पे देखा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है,
और इट्स नॉट वेरी बिग यूनिवर्सिटी एज कम्पेयर टू थापर यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर भी यार बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों बोल रहा हूँ, वहां के बच्चों ने प्रोजेक्ट किया और मैं हैरान रह गया। मैं बच्चों को 3 साल से बोल रहा था प्रोजेक्ट करने के लिए एयर पोल्यूशन के अंदर, एयर पोल्यूशन के अंदर, वो नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने करके मोहाली ट्रैफिक पुलिस को लेके इंप्लीमेंट भी करा दिया एक ट्रैफिक लाइट पे। वो क्या है, ट्रैफिक डेंसिटी को देख के सिग्नल की काउंटिंग वेरी करेंगे। और मैंने यहां पे भी देखा, अपने पटियाला में रोज देखता हूं ये चीज के लिए। और मेन रोड पे आपका ट्रैफिक लाइट का सिग्नल लगा हुआ है और बाईपास रोड पे भी बीच में कोई आ रही है। मेन रोड और बाईपास रोड की दोनों की काउंटिंग सेम है, ग्रीन लाइट और रेड लाइट की। हाउ कम यार, मेन रोड का ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डबल होगा जो बाईपास लाइन आ रही है। तो दिस मींस अगर मेन रोड जो जा रही है, जो सीधी बाहर निकल रही है रोड, मेन रोड, उसमें व्हीकल ज्यादा होंगे कि बाईपास वाले पे ज्यादा होंगे जो मोहल्लों में से आ रही है, स्ट्रीट में से आ रही है। ये तो टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ पे। और ये आपको प्लस 2 में पढ़ाई जाएगी, ये यहां पे बताया जाएगा, ये ब्लड यहां पे दिया जाएगा कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन कैसे करनी है। और मेरा यही काम है बच्चे, आपको बताना। सोच लो, आप अपनी सिटी का कंपेयर कर लो, मेरे लेक्चर के बाद खुद कंपेयर करना। आप जैसी रोड पे जाओगे आप देखोगे कि मेन रोड जा रही है, एक बाईपास रोड आ रही है या स्ट्रीट में से रोड आ रही है, सिग्नल लगा हुआ वहां पे, दोनों की काउंटिंग सेम कैसे हो सकती है। तो ट्रैफिक डेंसिटी को सेंसर लगता है वहां पे। सेंसर क्या लगता है, ट्रैफिक डेंसिटी को देख के, ट्रैफिक डेंसिटी को देख के, डेंसिटी क्या होती है जो अब व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, ट्रैफिक डेंसिटी को देख के उसकी सिग्नल की जो काउंटिंग है, जो मेन लाइन वाली कम कर देगा और जो बाईपास बीच में से लाइन आ रही है उसकी सिग्नल बढ़ा देगा, नो डाउट। यही चाहिए। और होता क्या है उस चीज के लिए, मेन रोड पे 50 गाड़ियों का लाइन लग जाता है, 50 गाड़ियों का लाइन लग जाती है और उधर से निकलने वाला कोई होता नहीं। उधर निकलने व्हीकल कितने हैं, 5, 10, 15 मैक्सिमम। सो ये सिंक्रोनाइजेशन, ऑटोमेटिक ऑफ ऑफ इंजन से सिग्नल्स और कंटिन्यूस लाइट्स ऑन एक व्हीकल पे, जगह आपका डिस्टेंस कम है, सिग्नल्स के बीच में डिस्टेंस कम है, हम नहीं करना बेटा, हमने यहां नहीं करना है चीज के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें उसके बारे में क्लास में पढ़ाना है बस। चाहे बीटेक हो, चाहे +2 हो, चाहे +1 हो, चाहे एमटेक हो, हमें पढ़ाना है उसके बारे में, इंप्लीमेंट नहीं करवाना है। तभी मेरे को बेटा ये पढ़ाने में मजा नहीं आता। कितनी में पढ़ाई जाओ, कितनी बताई जाओ, तो इंप्लीमेंट एक बार नहीं कर पाया। इनको मनाना पड़ता है बच्चों को कि बेटा एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करके देखो, और इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। जो बुकिश नॉलेज 4 साल तक लेके जाते हो, एक भी इंप्लीमेंट किया आपने बाहर? बेटा थापर में इंप्लीमेंट किए, थापर की बाउंड्री में इंप्लीमेंट होगी, बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन बाहर तो इंप्लीमेंट करो जो चाहिए सोसाइटी को। तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम बात करते हैं बेटा कि करना क्या है, इंप्लीमेंट पढ़ना क्या है, इंप्लीमेंट क्या करना है, जीरो है बेटा चीज के बारे में। ओके, सो दीज आर द पर्टिकुलर इफेक्ट्स ऑफ वर्लिंग ब्लूज की बात करता हूँ मैं। और ये एक मेरे पास ट्रिब्यून की कटिंग है जो आपको डिफाइन करेगा चीज के लिए कि बठिंडा रिफाइनरी है, वहां पे विलेजेस के पास दीज आर द इफेक्ट्स। विलेजेस ब्लेम बठिंडा रिफाइनरी फॉर क्रॉप डैमेज एंड बोविन इनफर्टिलिटी। और इसमें पढ़ोगे इट्स टोटली रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। ओके, इट्स टोटली एयर पोल्यूशन। ये लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे ना इसमें तो लिखा हुआ है, देखो फोर्थ फिफ्थ लाइन देखी हुई है। Refinery for not only damaging the paddy crops due to acid rain, but also turning their buffaloes and cow infertile. The Tribune reporting. And see this paragraph. If it's you ready, you can see he claimed this one. This one. If you can ready, then I move forward. He claimed more than 90% of households have one or more person suffering from the skin alignment. See, this is something we are here, and this is technology we are have. See this. Okay, this is something, the technology intervention, in spite of having a IITs, in spite of having a Thapar like university in institute in the India, which is topmost private university in India, and even IITs, we have a worst in IIT locality, that is Delhi.
IIT Mumbai is okay because it is located in Mumbai. And Mumbai you have a sea. When lot of rainfall is there, no doubt air pollution का तो वहाँ केस नहीं बनता बेटा, है ना? तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि बेटा कि हमारे यहाँ पे बेसिकली इंडियन सिस्टम में बेसिकली क्या है बेटा, सही बताऊं, ठीक है जी, कि क्लासरूम टू नोट्स, नोट्स टू पेपर्स, पेपर्स टू ग्रेड्स, ग्रेड्स टू जॉब, यहाँ पे आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे आपकी 4 साल में खत्म होने वाली है, देख लेना आप, ठीक है, गारंटी है बेटा, 4 साल में यही भी खत्म हो जानी है आपकी। लेकिन बात यहाँ पे यही है कि जहाँ पे आपने क्लासरूम से नोट से आपने वो ले लिया, उसके बाद आप यहाँ पे अगर कोई आई पे जाता है इम्प्लीमेंटेशन पे, एंड दैट पर्सन बिकम्स एंटरप्रेन्योर, एंड दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर आईज, एंटरप्रेन्योर्स, implementation entrepreneurs. Okay. So this is something meteorology and air pollution. I'm going to start a little bit about this. Okay, what is this? I'm going to just hold on. So this is meteorology and air pollution is what I'll start here, then I'll complete things in the next lecture. This is something how the pollutant are being released into the atmosphere and taken to the higher distances or somewhere else, how they are being transported into different atmospheres. And that's why when you have a pollution in Ludhiana and effect is being pronounced somewhere else, or pollution is being created by industry, and you are going to feel the effect over here sitting a 5 or 3 kilometer away from the industry, and this is just because how the meteorology and air pollution is being related. So once you talk about your atmosphere, your atmosphere is basically, have different layers, troposphere, stratosphere, depending upon the how you go up from the surface of earth, mesosphere, thermosphere, and exosphere, no doubt. So meteorology is concerned with the description of transport of pollutant from source to receptor. That's very much important. See this, what I'm talking to you. See, okay, this is source and this is receptor. Okay. Meteorology is concerned with the description of transport of pollutant from source to receptor. The meteorological elements, कौन से बताने वाला हूँ, टाइम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे बेटा इसके डिटेल में. Meteorological elements like wind speed, wind direction, humidity, temperature, so many parameters have the most direct and significant effect on the distribution and dispersion of air pollutant in the atmosphere. You can't get rid of that. If you see, this is a chimney. You must have seen this chimney at lot of industries. Okay. और आप बहुत जगह आपने चिमनी देखी होगी बेटा जाते हुए रोड पे. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कभी किसने पूछा हो कि चिमनी की हाइट यही क्यों है, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं है, और उससे कम या ज्यादा हाइट होगी चिमनी की, उसके अकॉर्डिंगली बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि जो इसमें से पोल्यूटेंट निकल रहे हैं वो जाएंगे कहां पे. और ये भी हो सकता है कि अगर आपने इसकी इफेक्टिव हाइट नहीं बनाई तो यहां से जो पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है वो सीधा आपके घरों के अंदर एंटर करेगा. सी दिस, इफ यू सी दिस, it's entering your houses. Do you want this? Do you want this? If you don't want this, then you need to know about this thing in detail, which we will be no doubt discussing very detailed in the coming lectures. So this is, I'm talking about dispersion. I'm going to tell you brief about dispersion and leave over here. Then I start again from the next lecture from here itself. So pollutants which are released into atmosphere are subject to 4 things. Always 4 things: transportation, dilution, modification, or removal. First, they will be transported to higher atmospheres. I'm going to discuss in detail, no doubt. Dilution, no doubt. Modification, how they are being modified. We don't want this modification and the removal. And we want this removal of our dilution. Okay. So transportation and dilution causes the dispersion of the pollutant into the higher atmosphere, into the atmosphere, thereby reducing the background concentration of the pollutant. This means अगर चिमनी से 100 के करीब पोल्यूशन लेवल निकला है तो ट्रांसपोर्ट और डाइल्यूशन इस 100 की कंसंट्रेशन को 30 कर देगा जो रिक्वायर्ड है. वही हम चाहते हैं. ठीक है ना. डाइल्यूशन क्या होता है बेटा? डाइल्यूशन क्या होता है? सपोज आपके ग्लास में एक आपने छोटा सा पानी दिया है, उसमें आपने पूरी इंक डाल दी तो पूरा इंक वाला वाटर हो जाएगा. अब वो उसका डाइल्यूट कैसे करना है? अगर उसी में आप पानी डालते जाओगे तो कुछ टाइम के बाद इंक का रंग कलर फेड होना शुरू हो जाएगा बेटा. व्हेन इट्स बीइंग फेडेड यू कैन से डाइल्यूशन हैज बीन डन. और यही पे यहां पे पंगा है.
देखो बेटा, इंडस्ट्री तो प्रोडक्शन होनी है। जब प्रोडक्शन होनी है तो इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ से रिलीज एटमॉस्फेयर में होना है। एयर पोल्यूशन क्रिएट होना है। उस एयर पोल्यूशन में मोनोऑक्साइड आएगी, डाइऑक्साइड आएगी, नॉक्स आएगी, सॉक्स आएगी, जो मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर इनकी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करके बहुत ही मिनिमम लेवल लेके चले जाएं तो ये चीज हार्मफुल नहीं रहेगी। एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू स्टडी दिस काइंड थिंग्स इन डिटेल। ओके, so this is something I want to share with you, but I stop here.